So, dear students, as yesterday we discussed the topic of this chromosomal theory of inheritance. तथ मज करे क्लियरस मज अकाउंट क्या गई chromosomal theory of inheritance. I'm पतन शुरू topic which we have to discuss or which we are going to discuss, that is called as linkage. And a link is a topic is linkage. Linkage क्या गई या ये कित पर करो explain कित पर करो define. Maar linkage partner broad, we should know law of independent assortment. Independent assortment. And as best for pata asi law of independent assortment. अगर याद है से law of independent assortment साथ Mendel जो तेमन तम साथ में निया तम साथ में सो round यानी कैरेक्टर आ रहे हैं round white या round yellow ब्याह निया के wrinkled green. पात यम साथ में F1 generation दिन करे तो कैरेक्टर R small r कैरेक्टर Y small y इधर F1 generation यम सारी is round and yellow. यानी these were round and yellow. Round and yellow. यम सारी plants is round and yellow. तो पात यम साथ में यह F2 generation कर. The F2 generation was the ratio that was 9:3:3:1. And the ratio is that was 9:3:3:1. And yatmas kya gitna yatmas ushin yim traits ya characters they got assorted independently. They didn't show any sort of dependence on other. Yes, one pair of traits didn't show any sort of this dependence on other pair of traits. Yeah, the alphas was one of this. ये pair of trait निया न ये round yellow ये मैं scotex plants में सन trait ये wrinkled green ये मैं base plants में सन मारे सन F2 generation में ये round इज़न शो ये रहे ये से greenness तेंते या इज़न yellow शो ये रहे ये wrinkles तेंते वो यम गए assort 4 types of combination में से गए कि gametes बने तो यम गए assort segregate the ratio was 9:3:1 या दोनों अल्फाज में वुचो अथ मज छ कैपिटल R capital Y शुरू आखिस तो small y शुरू आख यानी this is called as parental यानी अगर वुचो ये छसन निमोस ये ऐसे parental निमोस आख छसन capital Y ये तो ये बराबर आरन ये पर ब्याख आसन small y so these are called as parental types. तो मुझे भी हम समझूं वो आख यम का टोटल कॉम्बिनेशन को 16 अगर इस शोस टोटल कॉम्बिनेशन को 16 वो 16 करो आख वो आख तक को 14 यम समझ पिछोन माजस या तेलिया को 1:7:7:1 देख यानी आख ड्राव इट्स parental ठीक बाकी रह सारी रिकमेंडेंट्स अच्छा जरा बाकी सारी रिकमेंडेंट्स मतलब वो ये रहे यस सर रहे हॉस्पिटल हालांकि ना तो सिस्टम कुछ round and yellow I think that is recombination round and green is that recombination yes sir go दोइमन अल्फाज मंजन मेंडलन यम सातन ये F2 जनरेशन कर अतमस जाय ज्यादा recombinants यानी मेंडलन यम सातन F2 जनरेशन कर recombinants जाय ज्यादा मतलब कि पर वो ये जो सा ऐसे यूं capital Y दास it is purely round and yellow. This is purely wrinkled and green. बाकी इंसान अतमसन ड्राई मंजस they are called as recombinants. वो दोनों अल्फाज में शो frequency of recombinants is as compared to parents. तेरी दास रेशो 9:3:3:1. या she definition 1:7:7:1 this is. मगर पात कर काम पात आता इस law of ऐसे dominant ऐसे independent assortment पात आता ब्याह scientist यमो कर काम Batson was नाम Batson was यानी इस फंक्शन में नजर पड़ा क्या ये law of dominance क्या है linkage या पता scientist he is called as Batson in your plant sweet potato botany must be from Lathyrus odoratus yes sir in botany it is called as Lathyrus odoratus and even sweet potato too botany must be from Lathyrus odoratus इनकी plant इनका flowers ये तो सुनिए वो flower character आज हम लोग pollen grains pollen grain हम character में pollen grains
plant was pollen grains long. Plant was pollen grains long. The base is red in color. One plant was having long pollen grain and red. Yeah, long and red pollen grains. And pollen grains is long. The base is red in color. This denoted by capital L, capital L. Yes, sir. This denoted by capital R, capital R. Red. Yes, sir. The plant was round pollen grains. Yes, sir. The base is white in color. White round and white pollen grains. Yes, sir. This denote small L, small L. Small. या ठीक है वो यम करे काम हम पता नहीं है या इस यो थोड़ी मोई इसका आर में बाकी थोड़ी मोई खतर पी यस सर ये थोड़ी मोई खतर पी ये राउंड पूरा खतर हम खतर थो पी यस सर वो आख प्लांट was that was having long and red pollen grains ब्याख प्लांट was that was having round and white pollen grains तो ताकि मतलब वो या ऐसे dominant या ऐसे recessive ठीक है यमो दोयो मज निमो आख यमो मज निमो आख इथे पट यमो मज निमो आख यमो दोयो मज निमो आख ठीक पत यम सतन क्रॉस पॉलिनेशन मन करना है वो F1 जनरेशन एरिया सिस्टम कैपिटल L स्मॉल l कैपिटल P स्मॉल p this will be F1 height वो according to dominance law of dominance या Mendel's inheritance यम आसन long and red pollen grains yes sir F1 generation long and red pollen grain plants. Clear F1. But human F2 generation and cell pollination. Human cell pollination. Adi, suppose let's cell pollination and capital L small l, capital P small p. Suppose if male house you go cross capital L small l, capital P small l. Small p, sorry. Capital P small p. Young Satan Imokor, I do Shimo, a ratio according to money after generation. Yes, sir. After generation. According to Mendel, ratio was 9:3:3:1. I should detail of the 9:3:3:1 was ratio. Yeah, 1:7:7:1 was there. Yes. I think Shimo ratio draw I would opposite. Yes, sir. I draw 7:1:1:7. What is it? 1:7:7:1. But yet seems that the English yet is our ratio 7:1:1:7. This is totally opposite. Yes, sir. Go Yakman Musha Yakman recommended is yes, sir. Using yak new yakmuz raya recommended is jad. Yakmuz raya recommended is jad. Yet die parental character is jad. Parental. Yes. Parental traits. What was raya recommended is jad. I got it. Shows using the abdominal shoes. Type raya recommended is jad. Parental character da come. Yet gives us a Vishnu means from class for I do shimo parental trait is jad. Recommended is shimo come. In this class. Parental traits, so we put in parental traits where more than recombinants. Recombinant क्या हो? इंसान जो different चीज़ एक सलाह हो ताकि ये no ताकि सुंदर सलाह है recombinant. Recombinant recombination है. जो चीज़ पान में रहता है. वो एक सुंदर सलाह है capital L small l या capital P small p different traits इस सलाह ताकि सुंदर recombinant. Go you see ratio was 7:1:7. This was totally against law of dominance. That is 9:3:1. Yeah, that is also 1:7:7:1. Yimo क्या दो actually क्या मस्त yimo दो यम traits for example it is capital L या small l या capital P small p these are genes या according these are factors yimo दो yम genes यम हसा एक्सी chromosomes present तो यम पावन close यम दूर दूर दोन अल्फाजन मज
यमन जीनन दरमियान जन डिस्टेंस वारिया कम वो या वनो यम जीन अत फोर्स यमो अत फोर्स सु फोर्स अट्रैक्टिव दैट फोर्स कॉल्ड एज अट्रैक्ट फोर्स क्या करें पान ये थी क्लोज पान यानी यम सात यमो वो यमो दोप फोर्स that is called as attractive force. That is called as attractive force. Time section chromosomes पर genes आसन ची यम पान में इकवटे रोज़न. तो अत होय मुनाव this is called as a coupling phase. यमो तो नाव coupling phase. यानी अशवाकु पता सी linkage पर. यमो तो है अशवाकु जी linkage कट पढ़ना असली origin कट पढ़ना वो कित पर आई बात लिंकेज वो ये मुझे आ फेज नाउ क्या कपलिंग क्या वो इंसान से छोड़ा है वो उसको क्यों करे जीन्स दे आर क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स क्या समझ यह मसला इन्हें यह मसला हम पैरेंटल ट्रेट ज्यादा दाई ताकमज वुशी बुनो इंसान जीन्स दे आर यानी इसलिए हम पढ़ें जीन्स आर क्लोज जीन्स आर close to each other यम साथ genes close to each other आसन यम गसन segregate पान मतलब ये सी कैपिटल टी स्मॉल टी पास बनन गैमेट्स यह मजोस योन हाफ अत मजोस योन हाफ वाई यम साथ यम दूर थोड़ा आसन वाई यम पानी क्लोज आसन यम दोशो इंपोर्टेंट यम गसन पान सेपरेट के वो यम बनान पैरेंटल ट्रेट अत हो यम नाउ कपलिंग फेज यह मज कोर यमो एक्सप्लेन ये दोपो यह मज क्या गसन काम यम जन यम जीन्स आसन या दोन अलग क्रोमोसोमन पे आसन या तो यमन जीन अगर यम एक्सी क्रोमोसोमस पे आसन तेल यमन डिस्टेंस पाने आसन वारिया ज्यादा यानी यम क्लोज टू ईच अदर आसन बल्कि यम आसन फार अवे फ्रॉम ईच अदर गो यम साथ फार अवे फ्रॉम ईच अदर आस पे आसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कि रिपल्शन यम साथ मारे दूर आस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कम रिपल्शन क्या है ज्यादा दोपो येथसन जो अतसन दे आर here a force called as repulsive force. दोपो ये exert गसन repulsive force. Repulsion चिस्मान यम पानी दूर दूर सारे पचस गए attract. दोपो ये बाजहास मजन ये चिस्मान जन recombinant ज्यादा बानी as compared to parents. अतस क्या यहाँ चम आसन दोन क्रोमोसोमन पर जीन्स अलग अलग यम किसन सपर गुनियर होकुन पता है बुति बात है बने recombinants. या दोन जीनन दरमियान डिस्टेंस वारिया ज्यादा तेल क्रॉसिंग और गसी गो हुरल होस बने रिकमेंडेंट गो यह मज बुन दोम फेज रिकमेंडेंट ज्यादा बन अत दोपन यम जीन्स ऑन क्रोमोसोम दे आर फार अवे या देयर इज मच डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम और दे आर प्रेजेंट ऑन द टू अपोजिट क्रोमोसोम्स तवे सेग्रीगेट गसन सेग्रीगेट ये गई पात यम साथ फ्यूज गसन फर्टिलाइजेशन मज या क्रॉसिंग गसन तिम पता रिकमेंडेंट्स बनान अत थो नाव रिपल्सिव फोर्स क्या थो नाव रिपल्सिव फोर्स या अत फेस नो था रिपल्सिव फेस वन क्या कपलिंग फेस दोम क्या रिपल्शन फेस ये मज पर थ्योरी दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज कपलिंग एंड repulsion phase या repulsion theory यानी यमो कर पठन थ्योरी पतन तथ थोयम नाव कपलिंग एंड रिपल्शन यमो क्या वो दोपो कि यसन यम क्रोमोसोम्स आसन छ यम सातन जन जीन्स यमन पठन आसन क्लोज टू ईच अदर तम सातन छ तिम सेग्रीगेट गसन के तिम छ पानी क्लोज रोजन तम सातन छन रिकमेंडेंट्स बनन के तम सात छ पैरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस गसन तो दोयम वन रिपल्सिव दोपो अम सातन छ जीन्स आसन या तो डिफरेंट क्रोमोसोमन पेटन या तो आस दोन जीनन दरमियान डिस्टेंस वारिया ज्यादा क्या इस क्रॉसिंग ओवर गस इजीली रिकमेंडेंट्स बनन इजीली अत नो कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी यो क्लियर काम किन अम पतन आप मॉर्गन आसन टॉपिक ये छ लिंकेज इस बात में तो अम पता मॉर्गन इज father of modern या advanced genetics या experimental genetics यानी ये कुछ आपको ऑब्जेक्ट थी क्या बोर्ड एग्जाम्स में या
नीटस मज या मॉर्गन फादर ऑफ जेनेटिक्स फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या एडवांस्ड जेनेटिक्स तो मेंडल्स फादर ऑफ जेनेटिक्स मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या एडवांस या मॉडर्न जेनेटिक्स एम कर अतर वर्क मगर एम प्लांट यम नी फ्रूट फ्लाई ये टुक फ्रूट फ्लाई यानी इनका कर स्टडी फ्रूट फ्लाई रात किस लेक्चरस मज बने मैं दपे ये कुछ सात फ्रूटस बानस मज कुछ पाटस मज पे ये सात 5-6 दह ग केयर थोक सपोज ज्यादा पहन तम दसी डिकम्पोज पे ठंड अमे पे थोन तक तम मही दोज आर नॉट मॉस्किटोज बट दे आर फ्रूट फ्लाइज तिमन क्या फ्रूट क्या तम फ्रूट मटीरियल एज अ फूड मटीरियल इस्तेमाल कर तो इस फ्रूट फ्लाई साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये फ्रूट फ्लाई पन लाइफ साइकिल कंप्लीट कर only 2 weeks and it completes its life cycle only in 2 weeks go 2 हफ्तन प्राड़न यह कर लाइफ साइकिल कंप्लीट गो 2 हफ्तन पे इंसान स्टडी कर ज्यादा काल ज्यादा टाइम वेस्ट कर only 2 weeks पन लाइफ साइकिल दोम कत क्या अमिस मज क्रोमोसोम नंबर only 8 यानी क्रोमोसोम नंबर ऑब्जेक्टिव क्रोमोसोम नंबर only 8 गो 8 क्रोमोसोम यानी मेटाफेसस पे हेको क्रोमोसोम असल पे स्टडी कर हेको असल पे गंजराइत हेको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हाई पावर माइक्रोस्कोपस बाकी पैरामीटर्स हेको असल पे वुचित तो यह ड्रोसोफिला मॉर्गन बेस बाकी को एसोसिएट्स ब्रिज CB ब्रिज मज या ब्या स्टूडेंट स्टोट बैंक STUR स्टोट वेंट VANT स्टूडेंट जबरदस्त पे अत जीन मैपिंग कर जीन मैपिंग ऑब्जेक्टिव जीन मैपिंग कर जीन्स मैपिंग तम डिस्टेंस बाकी पे स्टोर बैंक तो मॉर्गन क्या कर अथ पे स्टडी एम न्यू अत मज ड्रोसोफिला न्यून अत मज बॉडी यानी येलो कलर तो वाइट आई ड्रोसोफिला दैट वाज येलो कलर तो बे आइज वाइट यानी वाइट आइज ठीक ब्या दिस वाज फीमेल ये फीमेल दोम न्यू अत मज दैट वाज ब्राउन कलर बट रेड आई इट वाज मेल यानी फीमेल तमिस फीमेल कलर येलो बॉडी तो आइज तम वाइट तो मेल इज न्यू दैट वाज ब्राउन बॉडी या ब्राउन कलर एंड रेड आई यमन कर क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन वो कैपिटल वाई नो यम खतर है ये सपोज बी ये खतर या यम खतर स्मॉल वाई यम खतर कैपिटल स्मॉल फॉर एग्जांपल अम पे कर यम सात यमन क्रॉस को क्रॉस क्रॉस करने पाते F1 generation was same no problem because of dominance but F2 generation F2 generation is the big ratio it shows from Mendelism law of independent assortment it shows deviation from law of independent assortment deviation मतलब इनको ओबेस law of dominance ये law of independent assortment के बल्कि अगेंस्ट
Yet draw ratio, yet draw parental traits, for example, 7 is to 1 is to 1 is to 7. Yet draw parental traits more. Parental traits draw more as compared to than recombinants. ठीक इन सब एक्टिव जनरेशन कर एक्टिव जनरेशन मज वुचान बेट्सन वुचाए तक एक्टिव जनरेशन दैट शोड डिविएशन टू दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स इथे पर ये पैरेंटल ट्रेट्स जाए ज्यादा एज कंपेयर टू रिकम्बिनेंट्स यानी रिकम्बिनेंट्स जाए ज्यादा की एंड कोर पर दोपन सेम यानी कि यम जन जीन्स आसन टू कंट्रोल द कैरेक्टर टू लोड द कैरेक्टर या ट्रेट एम दो या अगर यम दशवे एक्सी क्रोमोसोम्स पे यम हसा वेरी क्लोज टू ईच अदर या ठीक वेरी क्लोज टू ईच अदर एम दो एम साथ इन कर टर्म क्वाइन हमोन कपलिंग रिपल्शन यम कर टर्म क्वाइन दुपन यम साथ ज जीन पानी क्लोज टू ईच अदर आसन तिम छन सेग्रीगेट गसन and they do not segregate or separate. So, timan genes they are called as linked genes. These genes are called as those genes which are present on the same chromosome. And those genes which are present on the same chromosome and are very close to each other. These genes are called as linked genes. They are called as linked genes. The phenomena is called linkage. The phenomena is called as linkage. This term is the phenomena is called as linkage. Yes, the term linkage. The term was coined by Morgan. This is the objective. Yes, the linkage term. You can coin. It was coined by Morgan. Well, as a Morgan, but highly as a delil catch. And the genes close to each other. Yem Satan gamete formation. This is chromosome pair, this is chromosome pair. And some gamete formation. Crossing over it. Suppose this is gene, this is gene, this is gene. Go yet cross or Assortment. Why am somebody genes closer? ये है कि क्रॉस का एडमिशन तो जाए क्रॉस के थे दोपक अम साथ छन रिकम्बिनेंट ज्यादा बनन बल्कि दीज जीन्स रिमेन क्लोज टू ईच अदर दे आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज लिंकेज क्लियर सो दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज तो ये लिंकेज आसन दो तरीके बात एक one is called as incomplete linkage. Second is called as complete linkage. And incomplete linkage. Second is called as complete linkage. Yes, incomplete linkage. It is also called as partial linkage. This is also called as partial linkage. Partial means half. And suppose in chromosomes gene present. Yim close, magar thoda distance paani asan. Yim completely linked asan paani ke. And in incomplete linkage or partial linkage. The chromosomes, the genes on chromosomes are not completely linked, but it shows chance of crossing over. It shows chance of crossing over, because some percentage actually crossing over gets clear. वो partial linkage or complete linkage. दोयम को partial or incomplete. दोयम को complete. वो complete आसन complete linkage
After genes are, they are very close to each other. There is no chance of crossing. There is no chance of segregation. There is there is chance of a point to note, there is chance of segregation of genes. There is separation of genes. But in complete linkage, there is no chance of separation of genes or segregation of genes. So there will be no crossing over at all. So this is called as complete linkage. Go if पर आया पता नहीं ये शो क्वेश्चन indicate कर ये साथ Mendelism he was very lucky. Mendel was very lucky. उन साथ हम शोन question object take it. What was the secret of Mendel's success? What was the secret of? क्या उसका कामयाबी राज? आखिर तुम मतलब तुम कर मेहनत वारियां प्रैक्ट का रिकॉर्ड तुम रीट एंड क्लीन मेंटेन करते he took one pair of trade at a time. Magar asli important second that there was no linkage during his experiment. Tam saat ayin this linkage, agar this linkage aaye, so phase ekam se hekan ye benithan kya isam saat usun youth development of advanced science usun tam saat ken wo se hekan ye asal padhen kya we have physical say proof just factors and gene key wo tam saat he can see everything key so was advocate. So he was very lucky that he predicted that Mendel was very lucky that there was no linkage during his experimentation. There was no linkage during his experiment. वो तब जो से तो further पता नहीं पता usually Assortment usually Miss Morgan सुन जैसे या student was एम कर पर further बे एम कर पर gene mapping यानी एफ मतलब जिस तरह से हम इनसे genes on chromosome ये pattern क्या है ये distance क्या है she measure आपने क्या that's called as gene mapping. You can see objectives. So this was all about linkage. You go clear in level. So I think I'm potentially crossing over. So inshallah. Thank you.